अर्चित, कहिए। क्या तुम कितना जलते हो तुम इससे यार? मैं जलता हूँ? अच्छा। पीपल जेलो ऑफ मी, पीपल बर्न। क्या अच्छा भला अपना धंधा चल रहा था, बिल्कुल इन हाउस कॉमेडियन होके बैठा था मैं कि भाई देखो जोक्स हो तो सदफ जैसे हो, नहीं तो हो ही ना। फिर बिल्कुल जल भून के तुम खाक हो गए। लगा ऐसे कैसे, रुको ऐसे, लेट्स ब्रिंग द फाइट, लेट्स ब्रिंग द प्रोफेशनल इन द हाउस। क्या फायदा हुआ मतलब? So you get the hint. Then I if you got need the professional hint. help, if you need professional help, then you know the problem. फिर मैं क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? नहीं, पर और अच्छा करो। मोटिवेशन हैशटैग वेडनेसडे विजडम, तो हैशटैग मंडे मोटिवेशन। तो क्यों आए, मतलब कौन, क्यों तो नहीं, कौन आए हैं आज? मुखातिब कराएं। तो आज आए हैं आकाश मेहता, also known as कुछ भी मेहता। कुछ भी the stand-up comedian and the host of the Varta Lab podcast. Welcome, Aakash. Thank you for having me, guys. Hi, hello, listeners. So, Aakash, we usually start the episode with a food joke, but आज हमने सोचा कि आप आए हो तो Oh, you want to do a food joke? What do you call an Arab prince who really likes dairy products? A milkshake. Got it. This is we have a huge audience in UAE and Saudi Arabia. हमें माफी मांगनी पड़ सकती है। हाँ। तो अगर सदफ गायब हो जाए, मैं गायब हो जाए एक दिन, या आकाश गायब हो जाए, so you can trace it back to this joke. What do you call an Arabic हरी मिर्ची? What? शेख चिली। देखा, हमारा मेरा अर्चित कूड़ा जोक तो समझ में आता है, हमें समझ में आता है हमारी कूड़े जोक। Yeah, I have one which is either a wildlife joke or a food joke, depending on how you look at it. But what do you call a really fit cow? Cult fit जाने वाली cow. A buffalo. It's a buff. So we will be if we're saved by सब संगत का असर है, देखो। या तो हमें अरब्स मारेंगे या तो देसी लोग। आज तो मर के ही रहेंगे। निकले हैं सीना ताने, व्हाट वाज दैट सॉन्ग? निकले मेरे तेरे लाल चले हैं माए, अब तेरी लाज बचाने। आज तो कट के रहेंगे हम, कहीं ना कहीं तो कटेंगे। खैर, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, एवरी टाइम एक और मैंने पॉडकास्ट पे ना यही क्वेश्चन किया था कि बाकियों का ट्विटर हैंडल देखो कितना इंटरेस्टिंग सा होता है। अर्चित का फॉर एग्जांपल इज बैन टोफू, योर्स इज कुछ भी मेहता, माइन इज वेरी झल्ला टाइप का, बोरिंग। हुसैन सदफ वन, लाइक वन भी देखे तो इतना मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था कि आई कुडंट गेट हुसैन सदफ और सदफ हुसैन। आई एम द फर्स्ट हुसैन सदफ, और कोई नहीं है। हाँ, आई एम द वन ओरिजिनल। आई शुड एक्चुअली चेंज इट टू ओरिजिनल सदफ हुसैन or the new. So but like yours is very interesting, which is कुछ भी मेहता। Yeah. अरे कुछ नहीं, it's just life is absurd. कुछ भी हो रहा है, have you noticed? कुछ भी हो रहा है, literally कुछ भी हो रहा है। रोज कुछ नया होता है जिसमें मैं देख के बोलता है कुछ भी हो रहा है। So it's literally just that. And if you watch my stand-up also, it's very कुछ भी. There are a lot of, I've had that moment also in my stand-up a lot where the audience screams like क्या बोल रहा है ये आदमी। So हाँ, मैं है ही ऐसा थोड़ा आदमी। So that's why it kind of felt it's ऐसा ICSE में अगर बोलो तो it's a absurdist response to a very absurd world. That's what I'm trying to get at. But basically कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है जिंदगी में। You've seen Sadaf, random people with 300 followers have official public figure. Yeah. But that's very interesting. Absurdist. Yeah. Yeah, because there's no other plausible response. It's like the world is, I mean, look at it. Global warming हो रहा है, ये war है, कुछ ना कुछ. So it's all going to go to shit very quickly. It's a declining ecosystem. So might as well just completely embrace the chaos and embrace the randomness of it all and just have a good time in all of it. That's what I try to do. That's an interesting thing कि भाई देखो, बचपन में एक हमारे कहावत हुआ करती थी, आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। वही है, बस की मतलब मैं भी जल रहा हूँ। हाँ, जल तो अपन मिले, लेकिन मस्ती में जल रहे हैं। मस्ती में जलो। हाँ, मस्ती में जल रहे हैं। सही है। तो our listeners must have thought कि आज कॉमेडियन आया है, थोड़ी अच्छी बातें होंगी, खुशी की बातें होंगी, but
Surprise, surprise. We got you, dekha. There's so much. Food is the greatest joy, though. I genuinely have this strong theory because I go to such places to perform, that you've never even heard of. I usually have not heard of places that I'm going to perform to. I find out, oh, idhar bhi hota hai comedy, aur main pahunch jata show karne. And I have this theory ki any place on the planet where people have lived for more than 3,000 or 4,000 years now, they have something delicious, right? Because otherwise you would not last there for that long. You would have fucked off. You would be like, इधर कुछ नहीं मजा आ रहा है, इधर कुछ खाने को मस्त नहीं है, मैं इधर से जा रहा है, मेरे को कटने गया है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इधर. बट अगर एक भी चीज रहा ना मस्त खाने को, तो ऐसा लगेगा अरे माँ के हाथ का वड़ा, तो मैं रहता हूँ इधर थोड़ा 1-2 और साल और 1-2 जनरेशन और whatever, So I think it's very important. Like food is like the central binding one thing that keeps everything interesting no matter what. Interesting. The reason I'm saying interesting because I have always found, you talk really worldly things. आप बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं. कुछ भी नहीं. जहां आपने बिरयानी, खिचड़ी, निहारी, थोड़ा इधर उधर की बातें कर ली, अरे भाई हमारे घर से बनता, आइए हमारे घर वाला खाइए, बहुत मजेदार होता है. तो यही है. अर्चित पुरी हैज गॉन टू मैड्रिड. तो गांव वालों, सुनने वालों समझ लो. मैड्रिड में तो वो है ना, वो मिलता है वो डियर के पैर का चिप्स. मैं गया था. डियर के पैर का चिप्स. हाँ, वो मांस को ऐसा काट के उसका चिप्स बना के बेचता है वो लोग. फिर वो लोग चबाता है एज इफ इट्स फूड. बहुत इंटरेस्टिंग था वो. जैसे अंकल चिप्स होता है, दिस इज कॉल्ड भाई चिप्स. तो यही तो अभी भाई साहब भी जो है अर्चित पुरी भी वहां गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं. इनको भी कभी क्लास ली जाएगी क्या खा रहे हैं वहां आजकल ये भाई साहब. खैर, बिकॉज यू मेंशन्ड अबाउट आकाश कुछ भी, राइट, कुछ भी चल रहा है. तो कुछ भी हर जगह तो चल ही रहा है इन जनरल. मतलब सबको पता है, सबको पता है ये बात. बट खानों की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है. कंट्रोवर्सी चल रही है. अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी फिर से आई है बिरयानी के ऊपर. पीपल हु आर इन दिल्ली शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. आई मीन, or maybe people who are on Twitter should know the whole controversy in biryani. क्या controversy है बिरयानी का? अरे one of the party member, उनने ऐसा झटका वेजिटेरियन बिरयानी निकाल दी. Oh wow. एक तो झटका भी है, ऊपर से वेजिटेरियन भी है. कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आया था. The man's name is Tajinder Pal. वो झटके से सब्जी काटते हैं, नॉट लाइक सब्जी का खून निकाल के. आई थिंक खा के झटका लगता है कि अरे यार ये भी बिरयानी है अब. तो ये इसी पे हुआ था खूब बवाल. The interesting thing is actually Twitter और ऑनलाइन मीडियम इज अ वेरी अनफॉरगिविंग प्लेस. मतलब भाई लोग कहां से, इमेजिन रणबीर कपूर की 11 साल पुरानी वीडियो निकल गई कहां से, ठीक है. तो कहीं से तजिंदर पाल की भी कोई वीडियो निकल गई जहां पे ही टॉकिंग अबाउट कि भाई बिरयानी तो मीट वाली होती है. एंड नाउ ही इज सेलिंग वेजिटेरियन बिरयानी. आई एम लाइक, पीपल आर लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. तो ये कुछ भी हो ही रहा है. बिरयानी को लेके हमेशा बहुत कुछ होता था. जहां तक बात करें यूजुअल नॉट सो मच पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन डोसा, आइसक्रीम. Yeah, they're cutting everything on the cold plate now. That I saw that. But you can't blame them. See, COVID causes brain fog. So like it's, if you notice, like pandemic के बाद ही ये सब time pass शुरू हुआ है. I thought was freaked. Do you remember the tandoori chai craze thing? Yes. So there's a whole put everything in tandoor, right? Like I had tandoori Maggi in Nagpur once when I went for a show, and I was like, यार तू मेरे को क्या खिला रहा है? मेरे को ठेचा चाहिए था और मेरे को तंदूरी मैगी खाना पड़ रहा है अभी बैठ के. Aakash, to be fair and with due respect to my friends in Gujarat, Gujaratis started at Kerala milkshake, chocolate dosa. Oh, it's terrible. I have studied at NM and उसके सामने जो क्या मिलता था मुझे याद है. I was in Gujarat for 2 years and whenever I was in Ahmedabad late night doing a show, Manik Chowk was the place to go to, right? Like and I mean but I have this theory, because if you go to Gujarat, what they do is they do a lot of substitution, right? So they'll do cheese, but they'll also put mayo into the cheese, which is the most disgusting thing. But they also have the cheese chocolate sandwich, if you ever tried it, which is grated cheese, butter, chocolate chips, chocolate sauce. And if you are feeling particularly diabetic, then you can also get the canned pineapples in it and make it a cheese chocolate pineapple sandwich. About to add on to that because that's the one. And then if you're particularly feeling अरे थोड़ा कम मीठा लग रहा है यार, थोड़ा एक्स्ट्रा किया जाए, तो आपके पास जैम का ऑप्शन भी है, तो आप उस पर जैम जेली भी लगा सकते हो. And honestly, it's disgusting, right? Like as a concept only to eat. But if you grew up in Gujarat, then only it feels like a normal thing to eat. As a person who didn't grow up in Gujarat but is Gujarati, I was also like, bro, ये तो हम भी नहीं खाते. Like, ये क्या है? ये कहाँ से आया? ये तो कोई अलग ही तुम लोग cuisine बना दिया. तुम लोग को दारू नहीं दिया तो ऐसा करोगे?
But you know what's fascinating to me? Gujarat, I can't find any seafood. For a place with such a huge coastal area, like my entire narrative. Largest coastline Yeah. in India, I think. Yeah. And they all throughout my childhood, obviously I grew up vegetarian, but even now I don't even know if there is any non-veg food, or rather any seafood specifically that's happening there. Have you guys come across any? Not seafood, but I've had non-veg for sure, like meat. Yeah. Meat तो बड़ी मिल मुश्किल जाता से है. मिलता है. Meat तो बड़ी मिल. मुश्किल से मिलता है. अरे अरे बड़ी वो मुश्किल मिलता है. gotta go to the area, yeah, because there's a lot of, हाँ. especially in Ahmedabad, there's a lot of ghettoization. Like, you know, हाँ. it's a great example of culture and economics and politics and everything coming together. Because if you want to eat good non-veg, you have to go to that Nizampura area or somewhere in the middle in that gully, and then you have to eat it there. But यार गली? हाँ, I think there's a Nizamuddin bus stop के पास है ना कहीं पे वो. हाँ, कीमा samosa is very nice. Oh man, there used to be this guy who used to do 3 types of tikkas in a bun, and my friend got gutworms from eating it once, but we still ate there every time because it was just the most delicious food I've ever eaten. With gutworm. Yeah. That must have added some extra spice to the food. Dude, that mayo is like something, man. Like even in Baroda, they do shimoli and they do shawarma, but the mayo, man, the mayo just elevates it to another level. You know, it's interesting that ये social media पे popular हो गई हैं चीजें, not just in Gujarat but all over the country. I mean, लोग likes और virality के लिए ये सब करते हैं, but it's very interesting. Actually, this is a pan-India concept. This is Gujarat's export to the rest of the country in terms of food. Gujarat model है, Gujarat model. Yeah, mayo. They don't even call it mayo. They call it mayo. Mayo. That's what I always tell people. बीच में ना ये viral अभी तो of course peak पे आ गया, but it was getting viral कि वो दिल्ली वाले ओए होए होए अमूल बटर, ओए होए होए भैया ने एक्स्ट्रा मेयो डाला, तो ये वो. And I'm like, bro, ये तो चल रहा था ना गुजरात में अच्छा भला, तो ये नया क्या है इसके अंदर? ये बस दिल्ली में हो गया. और लोग और ज्यादा जो ये फूड सेलर्स होते हैं, जब कैमरा आता है तो वो और ज्यादा मेयो और ज्यादा चॉकलेट और ज्यादा बटर डाल देते हैं. ले मल और खा then मल जाके. You guys seen the video of that guy in Nagpur who makes Chinese and he constantly keeps saying अगर पत्ता गोभी मिलेगा तो तुमको 1 साल के लिए 1 person 1 plate free. That guy annoys me so much क्योंकि पत्ता गोभी का क्या गलती है इसमें बेंचो. पत्ता गोभी तो यार चिल आदमी था यार, उसको तो बस बनना था हक्का नूडल का पार्ट और तूने उसको कास्ट असाइड कर दिया. बिल्कुल बाहर नहीं, पत्ता गोभी तो है नहीं हमारे पास भाई. I swear. But do you guys feel this as well कि over the last 5 years all the food that we're eating is more Instagram friendly and less like when I go to a new place, like if I go to Nagpur and I say what do the locals eat every day, they'll take me to a fast food place and not to like, you know, a Sayaji place, you know what I mean? Like fundamental shift has been very upsetting for me as a comic, at least, because I go to Nagaland or whatever. I went to, like, for example, I went to Shillong. It was like a whole task explaining to people there. I was like, what do you all eat? And they're like, we'll eat a burger or I'm like, no. Like, what do you eat at home? Then they're like, oh, yes. Okay, that's what you want to eat. Then they take you to the place. Yeah, that's homogenization of what India eats and cultural inferiority in people. Bloody paneer. Yeah, everything will become veg kolhapuri one day. Like for Delhi, for example, I know food here, right? So I know where to go and what kind of food beyond the common street food. But when I go to Bombay or Mumbai, I'm always like, apart from vada pav, what else to eat, right? Because every time I'm like, let's eat something local cuisine. They're like, oh, local, let's go to Bandra. Like, I'm like, yeah, but I mean, eating locally and eating local is different. Yeah, absolutely. My biggest problem with that statement is कि Mumbai में इतना बढ़िया कोंकणी seafood मिलता है. Absolutely. But Mumbai food is known by vada pav. Yeah. Like vada pav, misal pav is what defines Mumbai food. Which is not necessarily bad, which is amazing as well. Just we will debate about that later. No, I mean, देखो यार, तुम लोग ने पूरा बेसन पे एपिसोड किया, तो तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब बोलने का कि मुंबई का वड़ा पाव अच्छा नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं तो फेवर में है. हाँ, but I think it's also, it goes beyond that also. There's so much other tiny stuff that you get here. I mean, just look, if you look at thali pit and all, that's like the Maharashtrian angle of it. Mumbai ka vada pav is, because Mumbai ka vada pav is the one thing that's agnostic of where the person is from, right? Like it's actually a product of the city. Yeah. But खरवस खा के देखो, खरवस I don't think कहीं और मिलता है कोई और शहर. What is खरवस? खरवस is the sweet that they make from the milk of a newly milking cow. Oh. Yeah, and it's supposed to be from that first batch of milk that comes. That's what makes it so sweet. I mean, I know the theory and I had it last time. Yeah. Like
last month I was there, but I have my doubts. I don't think. I also where don't will you think. keep on finding this? अच्छा ये fresh cow है या buffalo है उसके दूध से बना लिया. No, absolutely. But I mean, the cruelty is what gives it the taste. I feel because it's like अभी बच्चा हुआ उसका दूध छीन के तुमने बनाया तो taste. Correct. But khalwas tastes good though. Oh, it's a good delicious. thing. हाँ, khalwas हो गया. You have piyush and all that. But I'm saying is that these are something which what you mentioned right about Instagram, that everything is now there for Instagram or Insta worthy. Yeah. तो कुछ लोग जाएंगे बैश करके आ जाएंगे क्या बकवास बनाया है, और कुछ लोग जाएंगे उसी को बिल्कुल उसके ऊपर त्वचा सब irrespective whatever kind of गाना पीछे केसरिया तेरा बज रहा है उसमें कुछ और बना दिया, लड्डू बना दे, लड्डू बन रहा है वहां पर उसमें केसरिया तेरा इश्क है तो लगा दिया. So it's a very annoying thing and that's where the Kuch Bhi is happening. But what I wanted to also ask you, like, what is the most weird food combination that, and we'll go around the table मतलब around this mic. Archit के पास भी जाएंगे. What's the most weird food combination that you have had because you keep on traveling and you mentioned about your current. It's mostly in Gujarat only. और कहीं नहीं होता है ये सब यार. लोग ठीक ही है मतलब बाकी. I don't know how else to put it, but गुजरात में जाओगे ना, like I remember this one time I had a, you know those puff pizzas. You know, a puff pizza. Like fairly, I was quite impressed with the concept. I was like, okay, it's a puff base and it's a wow. पर अंदर cream क्यों डाला है? Like it's the weirdest thing, dude. It's like a pizza पर अंदर वो गंदा monginis वाला वो कड़क सा cream डाला है जो शक्कर का वो जो रहता है, and it doesn't taste of anything at the end of it. I've had most things in tandoori form which need not be in tandoori form. I've had a tandoori ice cream also, I think, at one point. Oh wow! And some college I got. Oh, this was a fun one. I got concoction that they called the gas exploder or something like that. तो मेरे को उसमें से गैस निकलती है और तुम्हारे में से गैस. Dude, it's like the इनो का बाप था वो, जो भी था वो. मैंने एक ग्लास ऐसा गट करके मारा and I just burped the loudest burp of my life. Like it was amazing. ऐसा लगा कि फेफड़े में से burp आया. एकदम जोर से आया एकदम burp. But yeah, mainly just that kind of stuff. I've been offered a lot of stuff. I've been offered a lot of poached meats over the course of my career, which I always say no to because I'm a conservationist that way. तुम लोग को हिरन खाने का मन नहीं करता because मुझे लगता है फिर टाइगर क्या खाएगा. ऐसा ही होता है ना. But local animals खाया मैं बहुत सारा. जहाँ गया उधर ऑस्ट्रेलिया गया उधर मैं क्रोकोडाइल क्या स्कैम है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल बोलता है अरे चिकन ही खिला दो ना, सेम ही है, कुछ है ही नहीं फर्क दोनों में. Correct. You know, so but yeah, that's made pretty much it. बाकी में ऐसा, you know, otherwise it's like sauce वाला ice cream and all that. There's no point. I don't even engage. Crocodile meat and frog meat taste like chicken, just for people who have never had. Yeah. Crocodile meat. I'll eat most meats at least once just to know what it is and so that I have the experience. Otherwise, I'm not particularly, my body isn't geared for meat. So, but whenever I have all these, I eat kabutar in the northeast, which could have been duck. Would not have known the difference personally. I've definitely eaten kawa coming from Mumbai. There has been some late night जहाँ पे मैं अंडा खाने को रुका और मैं बोला actually वो दे ही दो वो ग्रेवी वाला चिकन, तो वो चिकन तो नहीं. जुहू में there was this place which shut down ना because of rumors around it having kawa. Yeah. I've definitely eaten rat shish kebab at some point as well. If you've eaten outside Bandra station after 2:00. I am glad. I've never had rat at least. I mean, not like I'm averse to it. That you know of. But that I know of, correct. Yeah. कोई बता दो थोड़ी है ये rat गलावटी. हाँ ये भी है. वो मटन गलावटी बीच में बोलते थे ना कि मोमो के अंदर कुछ भी डाल देता है तो हो सकता है मोमो में काट के डाल देता होगा. But that's not a completely unfounded fear, right? Like if you go to the US and all, I didn't know this the first time I had gone and I had eaten hot dogs दबा के. Then I found out कि उसके अंदर कुछ भी डाल रहा है parts. Like it's literally, all the spare meat and organs and everything goes into that, dude. So like, you don't know. I like how you say spare meat. कोई भी कूड़ा करके डाल दिया उसके अंदर. What about you, Archit? What is your? Have you ever had weird combined food? We have never talked about this actually. I have had अजीब गरीब food combinations, but very recently Madrid में मुझे इंडियन खाने की क्रेविंग हो रही थी 2 हफ्ते के बाद और मैं जाके एक इंडियन रेस्टोरेंट में और अच्छे से रिव्यू पढ़े थे मैंने because I was skeptical obviously कि टट्टी ना खिला दे. So I went to a restaurant and I ordered paneer butter masala. I kid you not, and I will post this on Instagram, the photo. It was paneer in tomato ketchup. Wow. That's all. Paneer in tomato ketchup. ऊपर से थोड़ा दिखाने के लिए धनिया उन्होंने डाल दिया, but basically it was paneer in tomato ketchup. ये रेस्टोरेंट कोई बॉम्बे वाला खुला होगा. Because that's what paneer butter masala, chicken butter masala is in Bombay. Apart from Salanj Goila's butter chicken, but almost every other butter chicken that I've had in Bombay
There are like 3 places with good butter chicken in Bombay. That's it. मेरे हिसाब से. बताओ. एक वही है, एक what's the one down the road near Khar Telephone Exchange, that hotel. So then you bloody open the Google, dude. That's what you're here for. Freaking Amarjeet comes with his Nike shoes and doesn't produce for shit. Come on. Look for like top 5 best places to eat butter chicken in Bombay. It's a place near. So I mean, there's that Habitat that used to be the Shalimar Hotel. They had a mean butter chicken. I think they still have one. Yeah. Then there's one in town. If you go to Muhammad Ali Road ke udhar, there is a Zaika, which is one of the many Zaikas there. But one of the Zaikas there has a mind-blowing butter chicken as well. There used to be a really great tunde kebab place near Dotaki that I used to eat at, and then one day it just shut. And apparently it's because Dawood owned it, and oh wow, he had guests coming down, so they had gotten these guys from Lucknow to make galati. And once it was over and the guests left, so these guys also bounced back to Lucknow. Dukaan lagi chale gaye. The weirdest. What about you, Sadaf? The weirdest thing that I've had, and I actually love it, by the way, not many have heard it, in Bihar and Jharkhand and also parts of Bengal. You have something called Sev Bunia. Oh yeah. See, your mama. Fun. So save is save, right? Is this a campaign to save something like Save Bunia? Save Bunia. Or Bunia is the bundi or bundia. So bundia in Bihar is bunia, like D is silent. Yeah. Right. So unlike the Delhi bundia, which is a dry one, in Bihar, Jharkhand, Bengal, you have a little gila, right? So that's a meetha thing. And then you mix it up with the namkeen save. Yeah. I kid you not, it's the best thing to have. It's very delicious. Yeah. Yeah. But namkeen meetha together. And save is such an interesting ingredient. Like Jain people also do save tomato ka sabji, which is also really fun. Which is tomato, save and rasa. Correct. And it just works like a charm, dude. Like save works with most things, dude. And it's just such a beautiful invention. I have had save sandwich. Oh yeah. That's the thing. In Ahmedabad. Yeah. वहाँ पे चटनी वटनी डाली, 2-3 layer of save. Yeah. ओहो, और फिर आखिरी वाले लेयर में था गट्टा, मोटे वाले सेव. भाई साहब. Actually गट्टे अगर सेव टमाटर की सब्जी में डाला तो बहुत ही मस्त हो जाता है, because it's so thick ना, it can absorb more this thing also of the water. This one was epic thing. Gatte is just save that goes to the gym and has protein shake. Yeah. But it's actually, I think sweet and savory invariably is an easier combination to achieve. I feel like the sweet and kind of less sweet ones are the interesting combinations for me. Like if you do gulab jamun vanilla ice cream, I did not know that was a thing for a very long time, and when I found out, it changed my life. I know. And put some dry fruits on top of it. Yeah. Then doodh cola was another one like that, right? Because milk is on the sweeter side of things because of the lactose sugar in it, and then you have your thumbs up, which has no business being there, and somehow they marry very well together. I could not till date, I could not understand this combination of having doodh and cola together. I'm like, kya combination? It's just Kolkata, man. My intestines are crying listening to this. Oh, it's very delicious. Have you had Archit, what's the float? Coke float. So similar kind of concept, no? Ice cream mein dal diya. I describe it as a photo negative of a Coke float. That's how it is. Super. The similar concept. Ice cream डाल दिया कोला में या दूध डाल दिया कोला में. बस बेचारा जम नहीं पाया तो तुम ऐसे करोगे उसके साथ बेचारा. In fact, it's like less sugar, right? Because there's no sugar in the milk. Yeah. Ayurveda will reject it for sure. Yeah. But well, people accepted it apparently. I still don't like it. Actually, we had a guest on Varta Lab recently for a director friend of Naveen's, and he was talking about how wherever he goes, he eats McDonald's only, like, or KFC. Or he'll have paneer butter masala wherever he goes. Like, he just doesn't bother eating the local food there. And we were just freaking out on why you would do that, when you have such a golden opportunity to go to some random place and have a thali. You know what I mean? Like, I still, whenever I go to Guwahati, I still go to this Naga place and I still have bamboo chicken every time. And I hate bamboo chicken, but I still try it every time just in case. My opinion of it has changed because so many tastes are so far away only from the palate. Yeah, you must feel that, no, Archit, in Spain, like that whole paella wala wo flavor palette ही कुछ अलग है, वो मच्छी भी है, चावल भी है, अलग-अलग किस्म मछलियां. मच्छी चावल तो इंडिया में भी होता है, but ये लोग ना, they don't put masalas, so you have to taste the machhi. Yeah, that's what. In India में we just put thousands of masalas in the fish and then fry it or put it, or whenever we make biryani, prawn biryani, उसमें भी हम काफी मसाला डालते हैं. ये लोग मसाले नहीं डालते, तो तुम्हें you can taste the environment of the fish, जहाँ पे वो समुद्र में जहाँ पे वो रहती थी, तुम
उसका टेस्ट फील कर सकते हो. So that is different. Yeah, it's always I noticed that with Western cooking, where it's always more ingredient ka taste as opposed to the masale. Like even all the I was just noticing this on a lot of the cooking channels. If it's like a American person, वो एक अमेरिकन आदमी चना मसाला बना रहा था, वो मसाला साला तेल को टच ही नहीं करने देता ये लोग पहले सब इंग्रेडिएंट उगाएगा, बाद में तेल में सब करके एंड में डालेगा मसाला. And I'm like, why would you, like, something about unlocking flavors they are not happy with, you know. That's Yeah. was And a lot of people have this command ki in the West ki hamara food is based on ingredients. We don't have to add additives or flavors to it because the ingredients are so good. साले तुम लोगों ने हमारी country invade की थी spices के लिए because तुम्हारे पास spices नहीं I थे. swear, dude. I always do. I say this on stage also. Like England as a country, ये लोग क्या कर रहा है? ये लोग island है और खाने में नमक नहीं डाल रहे हैं. तुम समझ रहे हो? ये लोग के चारों बाजू दरिया है, dude. and yet they are not able to put salt Yeah. or black pepper. And then they were confused लगेगा. कि why is Gandhi ji walking so much to get salt? Put no in your food, then you'll see. इधर केरला तक आया पेपर लेने को, फिर डब्बे में डाल के टेबल पे रख दिया, बस इधर ही रखेंगे. बघार में डालो ना यार, तो थोड़ा टेस्ट आया ना कुछ. Dude, I swear, dude, first time I ate fish and chips, I was so disappointed, dude. Like I was like, shit, इसमें तो 1.5 लीटर टार्टर सॉस लगेगा यार फ्लेवर के लिए. कुछ था ही नहीं. Then I discovered beer battered fish and chips. फिर बोला नहीं, ये सही है. ये लोग that's why they add flavor in the batter only. हाँ, वो इतना मेहनत, बोलो कहता हजारों साल का हिस्ट्री है, ये लोग आलू नहीं पका पाते यार, ये लोग मैश करके छोड़ देते. एंड आई एम लाइक, डूड, इधर तो मैशिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यू नो व्हाट आई मीन. लाइक हाँ, like तो बेसिक है. बनता है, बड़ा बनता है. अपने इधर तो आलू का नृत्य है. उधर भी है ना आलू का बड़ा croquettes, potato croquettes. croquettes. अच्छा, यूजुअली ना जब हम एपिसोड करते हैं तो हमें फीडबैक आती है, अच्छी फीडबैक कि यार आपके एपिसोड सुन के मुझे बहुत भूख लग गई, खाना खाने का मन कर गया. आज नहीं आएगी लगता है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ सुन के. बट हम अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, पर ब्रेक के बाद हम अच्छे खाने के बारे में भी बात करेंगे. सो विल बी बैक इन अ जिफी. And we're back. आ गए अब तो, फिर आ ही गए, क्या ही बताएं, आ गए तो आ गए. खैर, तो आकाश, totally going by your last name and stereotyping you, of course, because that's what we all do as humans. You know, as humans we are so amazing. तो एक बहुत ही important सवाल था दर्शकों का कि यार तुम लोग हर चीज में चीनी क्यों डालते हो? है ना, it's weird. Actually the truth is ज्यादातर चीजों में गुड़ जा रहा है, चीनी नहीं जा रहा है. वही सेम नहीं है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है. तो गुड़ ले लो. पर हाँ यार, पता नहीं है यार क्या हो रहा है ये लोग को. मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक थोड़ा ऐसा मेरे को वियर्डली आइसोलेटेड और ऑड लगता है गुजराती खाना कभी कभी. बट आई ऑल्सो फील कि मोस्ट, like I was discussing this with Aakash Mehta when he had come on my podcast, where like a lot of our idea of what cuisine for a certain type of place is what you would get in a hotel. And what you would get in a hotel is highlight dishes that would probably not be eaten every year in a normal household. They would be saved for a festival or a wedding or some kind of important social event. So, I mean, yeah, and undiyu is like, you know, I'm not having undiyu 6 days a week. If I were to have it, it's terrible for you because of all, you know, उसमें भी वो तेल अलग से हो रहा है वो use. It's not like it's fried and all. But same with a lot of the other things as well. So, जो regular दिन में जो घर पे शाक जो सब्जी बन रहा है उसमें नहीं जा रहा है शक्कर. Like अगर मेरे घर पे आलू गोभी बन रहा है तो उसमें शक्कर नहीं जा रहा है. हाँ, दाल में पड़ता है, पर दाल में गुड़ पड़ता है मोस्टली, और वो तो पड़ता है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते. That is also true. But the same question people have asked me. Efficiency. So you don't have to wait for dessert. You can have dessert with the main course. Yeah, it's Gujarati efficiency. लोग ने सेम सवाल मुझसे पूछा है कि यार तुम लोग तो मुस्लिम है, तो नहीं ये नहीं कि जाओ बाहर, लेकिन ये बोला है कि गरम मसाला क्यों डालता है में तुम लोग. हाँ, see, it's such a silly, you know, like तुम्हारे घर पे अगर सुबह सुबह अंडा बन रहा है तो उस पे गरम मसाला नहीं डालने वाला तुम मोस्ट लाइकली. नहीं मतलब शायद unless we are making the पासी या कुड़ी, तो हल्का सा वही बोलता है पासी लोग कि थोड़ा गरम मसाला डालने का, सांबार मसाला गरम मसाला तो डालो. यार सांबार भी एक स्कैम है यार, मेरे को तो अभी रिसेंटली पता चला वो भी दाल ही है. ये लोग बस नाम बदल दिया उसका, ड्रमस्टिक डाल के मैं सब्जी डाल के. हाँ, मैं लगा ये तो यार ये तो मैं ही मेरे को पता नहीं चला इतने साल. एंड माय वाइफ वाज लाइक, डूड उसके नीचे वो क्या है, वो दाना दाना क्या है? बोला मेरे को क्या पता वो क्या है. अरे कुछ कोकोनट. मैं कुछ दिन पहले ना ऐसे रैंडमली YouTube पे
watching the videos and all stand-up comedy, and then हमारा जो एक और कॉम का अहले कॉम भाई है जो जेल हो गया है लौंडा अभी भी, he was doing stand-up on he talked about the Guju food as well, and he mentioned about खाने गया तो मीठा दाल हो गया, तो he's like अच्छा तो चलो थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि अपन लोग तो मुस्लिम लोग हैं, तो मुस्लिम लोग तो मतलब ऐसा तीखा खाने का शौकीन है, हमें तो पता ही है कि तीखा खाना है। तो he said that I bit into मिर्ची, क्या चलो मिर्ची तीखा होगा, लेकिन वहां भी स्कैम हो गया, क्योंकि वो था भरेला मिर्चा और उसके अंदर क्या था, बेसन विद चीनी या विद गुड़ तो मिर्ची की तासीर है तीखी होना, उसको भी मीठा कर दिया। Oh, but those are really nice. The big ones, no? They usually stuff it with an aloo wala, vada pav wala feeling ही रहता है उसके अंदर, वो बहुत मजा है। That's a Jaipuri Rajasthani. I love it. It's just so delicious. मिर्ची का तीखापन नहीं है, unhealthy, super unhealthy. ओहो और मिर्ची कितना ऑन इट्स ओन बहुत मस्त चीज है। लाइक मेरे घर पे हम लोग बहुत तीखा खाते हैं, जस्ट एज अ जनरल दिस थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इट वाज ऑलवेज वेरी ऑड टू मी व्हेन पीपल वर लाइक अरे तुम्हारा ये मीठा होता है, ये मीठा। एंड देन वन डे माय फ्रेंड एक्चुअली गॉट दाल फ्रॉम हिज हाउस एंड पुट इट इन अ बोल नेक्स्ट टू मेरे घर का दाल एंड सेड अभी दोनों सामने टेस्ट करके देख मीठा है कि नहीं है। So that's when I realized कि वो fuck ये मीठा है, क्योंकि वो normalization इतना हो जाता है ना यार। हाँ, correct. But have you guys tried umbadiyu? If you are in winter in Gujarat, you will find umbadiyu stalls on the side of the highway. Please try umbadiyu. It's basically all the ingredients of undiyu, but cooked in a pot underground with a fire on top. So it's smoked in that sense, and it sort of cooks in it, and it's just phenomenal. It is very delicious. Then the sabzi is khada या फिर बिल्कुल mashed? So everything is khada, but by the time it cooks, it becomes really nice and it's like a really interesting consistency. So उसमें वो पापड़ी जाता है छोटा छोटा, फिर तुम्हारा स्वीट पोटैटो है, रेगुलर पोटैटो है, केला जाता है उसमें बैंगन का बैंगन जाएगा, कुछ भी अरे सब कचरा वेजिटेबल जो भी मिला ना सब डाल देने का अंदर मस्त। And it just उंधियो तो वही है, and it has this very specific spice that goes with it and a very specific लीला चटनी you eat it with. Just creates for a very wonderful mixture of textures, because वो पापड़ी का तुम्हें क्रंच भी आएगा बीच में, केले का sweetness भी आएगा, sweet but like, and it's a whole range of sweetnesses also to play with in terms of ingredients, because केले से लेके sweet potato, फिर आलू, फिर वो कंद को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, पर कंद भी रहता है उसमें। It's just very interesting and nice and delicious as a slightly carb loading but and starch loading, but otherwise very delicious. So all winters में चाहिए भी ना। पर ये सब बताएगा नहीं कोई, like मतलब ये होटल में नहीं बनता है, क्योंकि होटल में बनाना भी मुश्किल है। So you know ये Instagram पे नहीं आएगा। हाँ, तो फिर क्या, फिर वो फाफड़ा। I know a lot of people now when they go to a new city, and I have been guilty of doing this. अगर आपको वहाँ का खाना देखना कि क्या खाते हैं लोग, तो लोग Instagram पे चेक करते हैं and then see वहाँ पे क्या खा रहे हैं, hashtag their city and food. So that sort of complicates things a lot, because then you will go to places only which are famous on Instagram. Yeah, or you'll eat things like we went to Kerala and they do that. There's some fish they eat there which is like a pomfret, dude, but like curry mean. Yes, curry mean and curry mean fry खाने का। अभी curry mean नाम सुन के मेरे को पता है ये 15 रुपए का मच्छी रहेगा, ये लोकल आदमी खाता है बैठ के तौड़ी के साथ पीने वाला। मैं 400 रुपए का करी मीन खाएगा, मेरे को टेस्ट आएगा ही नहीं उसका कभी भी, डूड। कैसे आएगा शिकारा में बैठ के मेरे को वो ब्राह्मणी काइट मेरे शोल्डर पे बैठा है, मेरे को देख रहा है उसका पेट वाला, एंड देन आई एम सपोज्ड टू ईट करी मीन। फक ऑफ, इट हैज टू बी डन द राइट वे। दैट्स अ लॉट टू। I have the same theory for pani puri. हाँ, एग्जैक्ट सेम थी यार। मेरे को 20 रुपए मिलता है, या फिर वड़ा पाव करो कि आई एम अ वड़ा पाव फैन। ओके, व्हेन आई गो टू बॉम्बे 10, 15, 20 रुपए मिल जाता है यार। यहाँ पे दिल्ली में वही सेम वड़ा पाव, बिल्कुल झंडू, दैट कॉस्ट लाइक 100 रुपीज। लाइक मैं मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू बॉम्बे टू ईट वड़ा पाव ओनली, बट आई एम लाइक 20 रुपए मिलता है। सेम विद पानी पूरी। रेस्टोरेंट में ना आई नेवर ऑर्डर रेस्टोरेंट में पानी पूरी, बिकॉज उसमें जब तक भैया के हाथों के पसीने ना घुसे तो मजा ही नहीं है ना। फिर तो टेस्ट है, क्या फायदा है। हाँ, अभी और वो ऐसे और क्या हाथ डाल के, पर वो I mean I don't know extra flavor. How many pani puri guys do you genuinely know जो पैंट में हाथ डाल रहे खाना बनाते वक्त? You know what I mean? Like I feel like we're past that as a nation now. उधर तक हम आ गए। You're not looking. You keep looking. They're doing it right. Why are you not looking? Why are you not looking? जब वो तुमको पानी पूरी खिला रहा तो उसको देखना कहाँ देख रहा तुम? देखिए लव मैरिज है क्या कि तुम उधर देखोगे फिर वैसा मुंह में देगा तुमको? ये पान नहीं है। भैया कबूतर कुछ लाया डाल दिया। Another really annoying thing like this, Gujus do this a lot, right? Where they'll go all over the world and they'll want to eat घर का खाना,
right? हाँ. And similar thing is what Delhi people do when they come to Bombay every time. They'll complain and bitch and moan कि इधर का पानी पूरी में तो रगड़ा डाल दिया. अरे डाल दिया ना, इधर ऐसे ही खाते हैं ना, चुप बैठ ना, वापस जा वरना. It's such an annoying thing to me. दिल्ली में यही आदमी दिल्ली वाला कलकत्ता जाके बोलेगा ओहो पुचका अलग. अरे तो ये भी अलग है ना, खाना चुपचाप. पूरा तुम 15,000 किलोमीटर दूर है और बोल रहा है कि अरे सेम कैसे नहीं, अरे कैसे रहेगा, सेम क्यों रहेगा, पागल है क्या हो. अरे फ्रॉइड ने कहा था इसको नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस, कि अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट ज्यादा डिफरेंट, तो वो हमें वी विल कंपेयर इट टू व्हाट we originally know. Yeah, absolutely. It's so bloody, and it's just, you know, there's a place called Chaitanya in Dadar in Mumbai. So it's a Malwani place, one of the most phenomenal. Go and have the tisra and the surmai plate there. It's amazing. Right? Auntie used to actually get water down from the Konkan to cook with. She used to get pani ka, because she was like, taste tabhi aayega, same banna nahi aayega. And then it took them years and years of experimenting to figure out how to get the water to taste right here, and then they stopped, I think, getting water from the Konkan. So I mean, if you want to be that anal, तो authenticity में तुम घुसते ही जाओगे उतना, पर एक पॉइंट पे वो जगह का खाना अलग ही होगा, बिकॉज वो जगह अलग है. हाँ, that's the beauty है, मतलब अलग ही जगह तो वही. अब नहीं तो खाओ जाके मैकडॉनल्ड्स, व्हाट यू मेंशन, जाओ मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हो, सेम मिलेगा हर जगह पे, मोस्ट प्रोबब्ली सेम मिलेगा. One can hope unless it's a vegetarian one, but I don't know. 2-3 कोई तो मैकडॉनल्ड है जो गुजरात में कुछ खुला है, ऑल वेजिटेरियन. हाँ है ना, सबवेज भी है. There's a whole scene. दोनों बाजू वेज काउंटर, बहुत वियर्ड लगता है. जैन भी तो जरूरी है, ऐसे कैसे. Awesome. तो एक और, because you keep on traveling so much and you mentioned this little bit here and there, but ऐसा स्टेज फाइट तो होता ही है ना, एंड काफी लोग को होता है कि अरे स्टेज पे जाने से पहले ना ऐसा कुछ करने का होता है या फिर नहीं करने का होता है. जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ WWE, ओके, तो उसमें ऐसा गोल्डबर्ग निकलता है, गोल्डबर्ग, तो ऐसे गोल्डबर्ग का बोला था, गोल्डबर्ग कम्स ऑन द स्टेज, ही जस्ट स्मैशेस हिज हेड ऑन द वॉल, ठीक है, या फिर वॉल, ये वॉल दरवाजा कहीं तो फोड़ता है अपना, ठीक है. और वो ट्रिपल एच वो फुवारा निकलता था. नहीं, वो ट्राई किया, वो तो वहां पे, हाँ, तो मतलब वो तो स्टेज पे किया, वो तो गिमिक है. बट जस्ट वन सेकंड, तू देखा नाम होटल का? हां, शाही चूल्हा. दैट्स नॉनसेंस. It's Sheetal Bukhara is the place with butter chicken. Sheetal Bukhara. But are this useless Nike Air पहन के आ जाने का बस ऑफिस, हाँ? काम कुछ नहीं, खाली चुत्ता पता नहीं कहाँ से मुफ्त की रोटियां कमा लौंडा. हाँ, if you want to hear more shitting on the producers, please listen to Varta Lab also. We do this only. We love. अच्छा, अभी तक तो हम बहुत इज्जत दे रहे थे प्रोड्यूसर लोग को. बिल्कुल मत दो इज्जत, क्या इज्जत देने का. ये देखो आ गया नियॉन कलर का एक्सीडेंट प्रूफ लड़का. छी, I don't know, I couldn't think of anything else. तुम्हारी इज्जत का लिज्जत पापड़ छनेगा. अरे आधा टाइम तो ऐसा लगता है म्यूजिक वीडियो में जी रहा है. देखो इसको, देखो इन्हें, ये है जॉर्डन के जूते. If you're watching us on YouTube, आपको दिख जाएगा, अगर नहीं दिख रहे हो. I just want to say as a person, producer Snehal, just saying Amarjit, and his name is Amarjit from now on, and I just want to point out that I don't know how much y'all are making off of this podcast, but he has way better shoes than I do, which should never be the case. हमने तो जूते ही नहीं पहने हैं भाई. शेयर कर यार, हम तो गरीब हैं. मैं भाई की चप्पल पहन के आया हूँ. मैं तो टांग में जूता चप्पल कुछ नहीं है, सब उतर गया है. देखो इधर से हाफ पैंट पहन के बैठे हैं हम तो. हाफ पैंट में कब पड़ रहा, अभी बस के जूते पहने मैंने तो यार. थर्ड कॉपी, वही जो थर्ड कॉपी, फर्स्ट कॉपी भी नहीं, थर्ड कॉपी पहन रहे हैं हम लोग. खैर, बैक टू गोल्डबर्ग. सॉरी योर क्वेश्चन. यस. हाँ, तो जब आप जाते हो स्टेज पे तो ऐसा कुछ, मतलब व्हाट्स द प्रिपरेशन? सब फाड़ते हो कि अरे अभी इतना कर. अच्छा, अगेन बैक टू, आई डोंट रिमेंबर व्हिच स्टैंड अप कॉमेडी और सम डॉक्यूमेंट्री इश स्टैंड अप था, जिसमें इट वाज मेंशनिंग दैट यू नो व्हेन यू गो ऑन द स्टेज, देन इतना 20,000 50,000 5 लोग 10 लोग जितना लोग भी दिखने आया, वो सब देख रहा है. एंड द मोमेंट, सो देन यू आर इन द मोमेंट विद ऑल दीज गाइज, राइट? सो ये सब लोग अभी दोस्त बन गया. द मोमेंट स्टेज इज ओवर, योर एक्ट इज ओवर, देन व्हेन यू गो बैक यू आर ऑल अलोन अगेन. तो वो हल्ला गुल्ला बंद. तो वो coming out of that phase, how do people do it, right? And second is of course that, do you eat before you get on the stage? I don't. I burp otherwise. I just keep burping and all on stage. Very disgusting to watch. और मैं हूँ भी बेशरम, मेरे को मजा आता है टकार लेने में, तो मैं भी ले लेता हूँ जोश में आके. But usually I'll eat very before the show, like 3 hours before the show.
and just before the show is probably coffee or just warm liquids, anything for the throat. But that's where, like, I think the come down is worse than the get up. Like, you know, the minute you hear people outside opening act stage पे और तुम कोने में बैठ के सुन रहे हो पूरा, and you're hearing the laughs in the distance ना, और एक जोक फटता है ना जब पहला उसका चल गया ना, तो you're like, okay, चलो, where sort of, it's very easy to get into it. Getting out of it is very difficult because you're in this very nice mental energy space where you're connected with so many other brains, and then suddenly it's alone in the hotel. So that's where food helps, because there's always a place to eat at before you know. Unfortunately, most great places shut by the time the show ends. So then you end up going to a lot of these random late night places instead. So then that becomes your experience of, like, my geography of so many places is determined by, you know, show किधर होता है और खाना किधर होता है, right? Like इंदौर में मैं जब भी शो करता, मेरे को 56 दुकान इसलिए पता है क्योंकि 56 दुकान इज ओपन एट नाइट. मैं कभी दिन में उधर गया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है उधर. मैं दुकान भी गिना 1-2 बार ही, है नहीं 56 से ज्यादा ही है. But like, you know, it's the whole experience of it has the food involved in it for sure. उसके बिना नहीं होएगा वो experience खत्म. So Mumbai has a lot of late night places. Yeah. अब तो तुम सब जगह ऑर्डर कर सकते हो, बट जाके खाने वाली जगह है मुंबई में सबसे ज्यादा है. I remember जुहू में वो अंडा बुर्जी मिलता है जो. Yeah. और बड़े मियाँ तो है ही in town. But tell us about other cities. Like Delhi is not famous for very late night food. Where do you go? No, there's so many. Dude, वो अपना साकेत वाला PVR है ना, जिधर बाहर सब बैठते हैं, वो तो खुला रहता ही है लेट तक. उधर तो जा ही सकते हो. फिर वो कौन सा वो एक परोठे वाला है, फिर एक ढाबा है उधर नोएडा के साइड. So there's a whole bunch of options. I won't tell you the names. Like there are 2-3 cafes. I would rather not share the name, where all the तुम्हें उधर ही सब कॉमेडियन पड़े हुए मिलेंगे. At the end of बाद में बताना. इतनी बार उधर मिलेंगे. And those places, I can tell you, cold coffee. Comedians are attracted to cold coffee. If a place has great cold coffee, the chances are that people will be attracted to that place. So cold coffee से ऐसे नींद नहीं चली जाती तुम्हारी? इसलिए ना, nobody wants to go to sleep. That's the whole point. Like you don't want the high to end. No, like we're addicts, dude. सभी स्टेज पे तो चढ़ लिया, अभी वो किधर से मिलेगा फिर से, इसलिए अभी एक दूसरे के साथ बैठ के बीचिंग करते हैं. कॉफी तो बहाना है, जंक फूड ही खाना है और बस घर नहीं जाना है. What other cities? Which city has the best late night food? Like underrated city. मतलब मुंबई दिल्ली तो लोग बात करते ही हैं, but और कोई अनोखी सिटी बताओ. नहीं देखो, नॉर्थ बेल्ट by default all food is just too good. Like I would say like Rajasthan kind of falls behind in that respect. बट लाइक अमृतसर चले जाओ या फिर कहीं पे भी चले जाओ. मैं तो रोहतक में भी रात को ढाबे पे खा के आया था 2 बजे, एंड इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग. दे हैड दिस थिंग कॉल्ड क्या खाया? दाल महारानी. मक्खनी तो घर पे रहेगी तुम्हारी, ये तो महारानी है बॉस. ओह माय गॉड, इट वाज माइंड ब्लोइंग. इट वाज लाइक जस्ट दाल मखनी ऑन स्टेरॉइड्स. And obviously that वो घर वाला मक्खन that you get in Haryana, so that is also very delicious. Most cities, like even in Vadodara, they have Gujarat, they have Ratri Bazaar, which will be open till 2-2:30, where you can definitely get all the food that you can get. जो भी रास्ते का चाइनीज से लेके डोसे से लेके ये सब तो कचरा मिल ही जाता है. But there are always at least 1 or 2 dhaba guys outside of a city that you should check out. So Baroda में there's one, I forget the name, but it's towards Samasavli. There is one dhaba there that's open till 4 in the morning for dinner. फिर और कौन सा था, एक बहुत ही सही जगह था यार. In Chennai there's a place, I wish I had the names of these places, but like in Chennai you will get kottu paratha till 3 in the morning. If you've never had kottu paratha, please try it. It's basically just paratha with veggies and chicken and all that jazz. Try the meat one. बच्चा कुछ पराठे को try कर दिया. मस्त. Try the meat one, that's the better one. Just saying. Yeah, I agree with you on that. The meat one is better. मैं last time जब आया था मैं वेज खाया था और बहुत ही बेकार था, क्योंकि उसमें बाइट नहीं है. मेनली वो है, अगर उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट होता शायद तो बाइट ज्यादा बेटर आता. Correct. तो वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा. I think one place where I hate late night is Bangalore. Bangalore really sucks for late night food. I've never had a great experience because I feel like it's also all the local food is great at in the morning. You know what I mean? Like वो इडली रहता है, फिर वो स्टफिंग वाला इडली रहता है. You know the one? Then there's the, what's the stuffing वाला इडली called? Yes, there you go. Now he gets it. But there's, so all of that is more like morning भरवा food. इडली. नहीं. गाली मत दो इडली को. शरीफ इडली. पर एज सच कुछ नहीं रहता. मतलब हाँ, रमजान के टाइम पे रहेगा तुमको, रात को पूरा नाइट मार्केट वगैरह वो चालू हो जाता है उधर मस्जिद वाले रोड पे, तो वो बहुत टेस्टी होता है. वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इफ यू वांट टू गो अराउंड ऑल नाइट ड्यूरिंग ईद, बाय द वे, बिकॉज आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ डूइंग रमजान इन मेनी सिटीज, बट हैदराबाद, if you want to stay up all night and just walk around and just be amazed and eat, Hyderabad is the best, I felt.
is the place. Correct. Yeah. I think almost like on all the places that I have been to during Ramadan, right? Hyderabad, Bombay, Delhi, all other places as well. सोते ही नहीं है लोग. हाँ dude, सोते ही नहीं. I don't know what is up. इतना एनर्जी किधर से आ रहा है? Like हाँ, हम like तुम सुबह से रात तक भूखे मर रहा है, and yet you are talking about as if अभी तो full energy है मेरे में. Yeah. ये क्यों है? It's all the Halim, dude. It's the Halim. It's all the Halim. सबके पास नहीं होती लक्ष्मण. दिल्ली doesn't have Halim. तो मैं तो हलीम खाया ना पहली बार जब मेरा पेट ने बोला भाई ये अलाउड ही नहीं है तुमको. क्योंकि इतना रिच खाना वेज पेट को कैसे भाई नहीं हो सकता. तो आई हैव अ क्वेश्चन. वो जब निकला पीछे से तो हलीम की कंसिस्टेंसी में निकला या सॉलिड फॉर्म में निकला? नहीं, उस दिन इतनी सारी चीजें खाई गई थी कि फिर रादर उस रात you can't tell. You can't differentiate scientifically. बस ये हमारे पॉडकास्ट का आखिर हो रहा है. मतलब ये एपिसोड ही नहीं, पूरा पॉडकास्ट ही खत्म हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन. भाई हमने लजीज डिलीशियस फूड के बारे में क्या बात नहीं है, यहाँ पे लोगों का स्टूल टेस्ट किया जा रहा है. अच्छा, when you go to these places at night, I mean, of course, you'll have other comedians with you, but रात को ना बड़े अनोखे लोग मिलते हैं. Very eccentric stories, very eccentric type of people. Have you met such people at these late night haunts? Without a doubt, and especially when there is alcohol also involved is when things. And see, most cities don't have a drinking culture at all, right? I remember in we had done a show in Ludhiana, and then in Ludhiana there are no really like there was no bar as such that was open at night. There was this place जहाँ पे दारू वाले की दुकान थी, उसकी बाजू में एक कमरा रहता है, उधर बैठो और दारू पियो. And that kamra is actually owned by the restaurant which serves the food, and that's how they pay for the whole thing. And there's no maximum retail price on alcohol. They have minimum retail price on alcohol. So इतने की तो है ही. इसके ऊपर तेरे तलब पे डिपेंड करता है तू कितना पैसा देगा इसका. So when we went there, I remember वो goat testicle का कोई डिश रहता है. मेरे साथ मेरा दोस्त सुमित था. He's also a food filmmaker, so you know, and he was documenting me doing the tour. And my God, dude, the food is so good. It's so good. But the company is ridiculous. Like झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी बातें हो रहा है. Even in Bombay, like there's the place where I go to Chicken Center करके जगह है, which is close to where I live. And Chicken Center used to be great before the more stringency of police in Mumbai. Chicken Center would be one of those places जहाँ पे शटर बंद हो जाता था और फिर सुबह 4-5 बजे तक the bar would be open and the kitchen would be open, and then you could stay for as long as basis how well they know you, they'll let you stay for longer types. You know what I mean? तो like वो 2 बजे एक बार वेटर आएगा और जो अननोन टेबल्स हैं उनको बोलेगा अभी बंद हो गया, अभी निकलो, और बाकी सबको कान में आके बोलेगा बताओ कुछ चाहिए क्या, ऑर्डर कुछ चाहिए तो अभी दे दो. So कान में से शेडी हरकतें. And I remember जब मैं कॉलेज में था बॉम्बे में, तो we used to go, किसी के पास गाड़ी थी तो he used to go drive around Juhu, and जो वो भुर्जी पाव वाले लोग आते थे वो ऐसे गाड़ी में पास में आके बोलते थे भुर्जी पाव चाहिए. like they're selling us meat or something, man. Like, did you ever go to Prakash? Yeah. Oh yeah, so that used to be our thing. Station. I was in Mitibai. I was not in Mitibai. I was in Praveen Gandhi Law, so we were on a same building. Yeah. So वो Prakash में रात को तुम जाओ तो like it's like, and that's where I had mandeli fry for the first time. I had never eaten mandeli fry in my life. And I was like very drunk, and somebody इतना छोटा सा मच्छी रहता है पूरा ही फ्राई करके देते. And I had eaten it that night, and I was like, wow, what a great starter, the best starter of all time. Then one day I ate it sober, and I was like, fuck, हड्डी का दुकान है ये मच्छी. इसमें मच्छी ही नहीं है, साला हड्डी है सिर्फ. So, but Chicken Center, you would get the entire cross section of society. You know, you'll get really rich uncles who have been coming there since they were 17-18 years old. You'll get BMC का वो ऑफिस का बंदा भी रहेगा, बिल्डर भी रहेगा, जिसको ब्राइब लेना है वो भी रहेगा, देने वाला भी रहेगा, प्रोस्टिट्यूट भी आया खाने को और क्लाइंट भी आया खाने को, लोग अपना फैमिली भी लाया है. So it's a very bizarre, and I remember so many times there's this table of reporters, I don't know if they still sit there, but we used to have so many fights with them. And just come back to normal back base next day, immediately. It's such a part of the culture. फिर तुम्हें पता है कल आके ये फिर से चिकन चिल्ली मंगाने वाला है और फिर वही होने वाला है, ये वापस रॉयल स्टैग पीने वाला है. तो very fascinating it becomes. The most weirdest thing that I have ever seen यहीं पे सफदरजंग in Delhi, the hospital, right? सफदरजंग hospital like similar to मूलचंद वगैरह ना, मूलचंद में भी से पराठे हैं, सफदरजंग में ठेले लगे होते हैं. If you don't want to go to मूलचंद, and तो यहाँ पर सफदरजंग,
तो अपन लोग गए थे, वैसे 4-6 लोग थे, बड़ी जोर की भूख लगी रात को, मिडिल ऑफ द नाइट, लिटरली मिडिल 2 बजे थे, एंड यू वांट टू ईट फूड। तो वहां पहुंचे हम लोग, अब कुछ खाना है, हमने ऑर्डर कर दिया। अब हम खड़े हुए कि हाँ अब आएगा अब आएगा। अचानक से पीछे ना पुलिस की साइरन आई, एंड आई एम नॉट किडिंग, 5 मिनट में दुकान बंद। सबने उसके ऊपर प्लास्टिक डाला, दन दन दन, सब भाग गए। हम लोग लाइक वेट व्हाट, खाना भाई, खाना कहाँ गया हमारा? देन पुलिस वेंट एंड देन दे ओपनड अप द स्टॉल अगेन। फिर वापस से हमें देना स्टार्ट किया गया, और हमें बोला गया कि थोड़ा दूर जगह बैठने के लिए, यहाँ नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि कभी पुलिस आ सकती है। तो हम सब बिल्कुल पेमेंट बैठ गए। अच्छा, अगेन द सेम थिंग हैपेंड, वी सैट देयर एंड द मोमेंट वी स्टार्ट ईटिंग, पुलिस केम अगेन एंड दीस टक 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 बंद किया, निकल गया फिर से। एंड वी लाइक आज धंधा नहीं हो पाएगा। कितने लोगों ने तो पैसा दिया होगा तो उनका खाना छूट गया, कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा, खाना खाकर निकल गया। अरे ऐसे ही चल रहा है काम। एक बार है ना, दिस इज लाइक मेरा वाज अ किड, ओके, व्हाट वाज दैट, आई थिंक बोरीवली के पास ऐसा है ना, एक सेम सिचुएशन, राइट, लाइक बट इन द इवनिंग एवरीबॉडी off and the only thing left was just this one dude eating pani puri. Just I'll never forget the visual. He was just like, अरे कहाँ गया पब्लिक, कहाँ गया? And then the cop is like, इधर पानी पूरी वाला था, and he's like, नहीं, उसके हाथ में कहाँ? ये तो ऊपर से आया। ये तो अल्लाह की रहमत है। देखिए हमें कटोरियों में मिल रहा है। And I've never seen it, but that day the fucking BMC guy slapped the customer, dude. Fucking कि मैं है क्या? मेरे को दिखता नहीं तेरे हाथ में क्या है? So he was trying to be a nice guy, by the way, just saying. Like, उसका घर बचा लेते हैं, हमारा घर तो क्या हुई बात ही नहीं, क्या ही मत पड़ेगा। खैर, हम आ रहे हैं अब अपने अंतिम पड़ाव के ऊपर, और यहाँ से सिर्फ ऊपर जाने के लिए 5 करोड़ का ही सवाल है। हाँ। आजकल कितना मिलता है? 7 करोड़ की 5 करोड़? मैं नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है कि तुम्हारे पूरे गांव का सैड स्टोरी सुनाते। हाँ वो तो है, वो तो आजकल हो गया। वो that's worth 100 crores। आंधी मेरा कजन गया था उस पे, और उसका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहला, लाइक ही वाज द बेस्ट वन, बट ही डिडंट हैव अ सैड स्टोरी। यही तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी यही घटना घटित हुई है कि मेरे पास भी सैड स्टोरी नहीं थी ना, तो मुझे भी नहीं रखा गया। That's why। ये बता रहा हूँ, रियलिटी शो के ओनली बैरियर। अगली बार हाथ काट लेना अगली बार। अरे वो सब नहीं होता, उतना नहीं, बस बोलो घर में बिन ब्याही बहन और अंधी माँ है, और बस काम इससे हो जाएगा। मतलब ये तो बेयर मिनिमम होना चाहिए। पर अब तो स्टेक्स हाई हो गए ना, लाइक अंधी माँ डजंट कट इट एनीमोर मैन, लाइक यू हैव टू, अंधी के साथ यू हैव टू प्रॉब्ली, आई डोंट नो, हाँ कुछ और करना पड़ेगा। लाचार माँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। Yeah, it can't be like, it can never be like, मम्मी बहुत annoying है, please। नहीं ये नहीं होता। तो पहली बार कर देंगे बेटा, ये तो कोई स्टोरी नहीं है। मुझे 7 करोड़ चाहिए ताकि मैं मम्मी के लिए सीआर पार्क में घर ले लूं और वो मुझसे दूर रहे। Even if that is what you want, लेकिन थोड़ा सा अलग से पैकेजिंग करनी पड़ेगी। बोल नहीं, बस ऐसा कि मम्मा को जमुना पार भेजना है। हाँ, कि मम्मा का बचपन से ना सपना था, हम बिल्कुल 1 BHK में रहते थे, तो अब 7 करोड़ मिलेगा तो मैं घर खरीदेगा उससे, ताकि मम्मी के लिए अच्छा घर मिल सके। और वही 1 BHK में अपन रहेंगे, बिल्कुल रात भर बिल्कुल पार्टी होल हाउस बन रखा है। क्या लास्ट सेगमेंट इज आवर अंडररेटेड, ओवररेटेड एंड फेवरेट फूड। सेम चीज, बिकॉज अरे हमने वो नहीं किया यार। सुको, सॉरी, लेट्स टेक वन स्टेप बैक। हम तो ये तो क्वेश्चन मिस ही कर गए। As I mentioned in the beginning before we started our podcast, is that when you go in groups, right, to all these different stand-up comedies, gigs within India or outside, two people, one जिसको बड़ा पसंद है food, and one जिसको हर चीज में नाक घुसड़ना होता है हर चीज में। Yeah, you usually don't end up traveling with other comedians that often, because usually it's just you on tour alone. It's only very occasionally that you go with other people, और उसमें फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ना जब तुम फ्लाइट में बैठते हो तब वेजिटेरियन होते हैं, है ना। फिर क्या होता है ना, फिर धीरे धीरे ना, फिर ऐसा जैसे जैसे ऐसा थोड़ा थोड़ा सा पर खुलते जाते होंगे। अच्छा ये क्या है, ये थोड़ा अंडा है, अंडा ट्राई करके देखता हूँ। ओ ये तो चिकन है, ओके ट्राई करके। ओहो पोर्क बेली, ओहो चलो चलो चलो, ऐसे करके धीरे धीरे साले सब खाने लगते हैं यार। एंड इट बिकम्स क्वाइट अनोइंग, एंड देन दे विल लाइक, नहीं मैं तो वेज है। अरे घंटा तो वेज है यार। घर के बाहर वेज है। Who is the big foodie as per you in the stand-up comedy circle that you know? अरे बहुत सारे यार, लाइक निशांत तनवर देख लो। निशांत तनवर के कारण मैंने इतने पान खाए, तुम्हें आइडिया नहीं है, पता है। निशांत तनवर, shout out to Nishan, he's such a great guy. Wherever he goes now, he ends up wanting to eat pan, and then the producer, if he likes the pan, it's like a victory for the producer. तो जबरदस्ती हम लोग को भी खिलाते फिर वही प्रोड्यूसर वो पान,
कि अरे निशांत भाई को पसंद आया था, अरे पर मुझे पान भी नहीं पसंद, एंड लिटरली बिकॉज ऑफ निशांत तनवर आई स्टार्टेड ईटिंग पान. Nobody else could make me do it. Baki, I think Biswa Kumar are also very into. I mean, I generally am part of a group of friends in life also, and at work also, who are just really into food. So even Naveen and I, both of us on Varta, we are huge on food. So whenever we go, it's always those notes are being shared with each other कि इधर क्या खाने लायक है और उधर कहाँ जाना चाहिए and all that jazz. सब भूखे पड़े हैं दुनिया में. हाँ, खाने के मामले I don't. In fact, I would say that non open minded food wise ऐसे comedian का minority है. Like dietary restriction रहेगा तो उसके कारण obviously, but other than that I don't know a lot of comedians who don't like to eat good food, great food all the time. क्योंकि और क्या ही है ना. I तो feel it's as important to eat the local food at a place that as it is to maybe go see a museum of the place, because if you talk to somebody who actually knows what they're talking about when it comes to the food, it's as much of the history and the culture, probably more than a museum in India has to offer. So that's true, including all these what you mentioned already कि junk हो चाहे healthy हो, खाना मिले खा जाओ. This is actually interesting. मैंने तो पूछना ही बंद कर दिया लोगों को. Mostly everybody likes food. जो what you said कि जिनको नहीं पसंद, जो ज्यादा को फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी खिला दो, वो लोग minority है. अब everybody has their distinct taste, or everybody has their distinct choices now with food, or everybody likes to express it as well. So, people used to. तभी सदफ हमें पूछते नहीं है कि आजकल अरे आप फूडी हो. सभी अपने आप को कोट एंड कोट फूडी बुलाते हैं. हमने आपको बुलाया तो फूडी तो होंगे ना, तो क्यों मतलब क्या पे. एक टाइम पे लोग किताब पढ़ते थे, अब लोग खाना खाते हैं. You know what I mean? आप किताब नहीं पढ़ते हैं, अब वीडियो रील देखते देखते खाना खाते हैं. अच्छा, फाइनली हमारे फाइनल पार्ट पे आते हैं, which is underrated, overrated, favorite. तो आकाश, एक अंडररेटेड फूड आइटम बताइए यार. तुम लोग ये घर पे बनता है फ्रेंच बीन्स वाला सब्जी बनता है कभी? आज बना है. हाँ, वो फ्रेंच बीन्स with आलू, with little आलू pieces and little गाजर pieces and हाँ, मैं मेरा बता रहा ना इससे, तो कहीं तो हमारे मार्ग अलग हो जाएंगे. और उसमें वो थोड़ा छोटा वेज, एज इफ वेज था नहीं घर पे बचा हुआ, उतना ही वेज. और साथ में ना दाल, वो गुजराती तड़के वाली दाल, उसमें राई का तड़का रहता है मस्त, वो दिखता है राई एकदम फ्लोट होता हुआ अंदर, थोड़ा मीठा ही रहता है वो. I love such non-exotic answers. मतलब जब लोग underrated में कुछ fancy बोल देते हैं, but मुझे ये दाल चावल टाइप आंसर पसंद है, बड़ा underrated. मतलब मेरा फेवरेट कुजीन ना घर का कुजीन है, किसी के भी घर का. मुझे लगता है घर का खाना has like the perfect amount of just the right, because घर का खाना is like the baseline reality of life. You know कि बाहर तुम जो भी बनो, जितना भी उखाड़ लो, जो भी खा लो, घर पे आके जब वो फ्रेंच बीन और दाल ऐसा डुबो के खाते हो ना, तो तुम्हें औकात याद आता है अपना. You know, so it just makes it very nice and very homely. And most people's homes will make a version of French beans, and it's always go to delicious, always great. Bhindi you can get right, you can get wrong. Some people like to overcook, some people like to undercook. But French beans is one weird vegetable which is not your kanda tomato, which is full of great, so you don't feel like you ate junk also. And it's just delicious. So that I think is the most underrated. उसको तुम रोल भी बना सकते हो, पता है, उसका तुम बरीटो बना दो रोटी में स्टफ करके. मेरा भाई है ना, he's like a child dude, he doesn't eat. So then उसके ना उसकी वाइफ स्प्राउटेड मूंग और वो फ्रेंच बीन का सब्जी, उसको उसके ऊपर थोड़ा टाको मसाला डाल के रोटी में रैप करके उसको फिर मैं ऐसा एरोप्लेन की तरह वू करके. But so it's a very versatile this thing. सदफ, फ्रेंच बीन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रेंच भी नहीं बोलते हैं उसको. जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब मेरे घर में पता नहीं, मेरे सब लोग बीन ही बोलते हैं. फ्रांस बीन, फ्रेंच बीन ऐसे ही बोलते हैं, कुछ उसका हिंदी नाम नहीं है. मेरे तो चोली बोलते हैं गुजराती में. पर बहुत सारा चीज को चौली बोलते हैं गुजराती में कभी कभी, तो मैं कंफ्यूज हो जाता है, पर मैं सबसे चौली बोलते हैं मेरे घर पे. चौली के पीछे क्या है? फिर ओवररेटेड में तो भाई कितना ओवररेटेड खाना है इस दुनिया में, मैं कहाँ शुरू करूं? बस एक ही बताना है, सब तो हमें पता है. अरे overrated food, it'll have to be like any food that everybody tells you to go and eat is 9 out of 10 times overrated. Like, you know what I mean? Yes, especially if it's like tandoori Maggie. You know, like whatever is trending on the Instagram reel this week is overrated and unnecessary, and you can definitely miss it. वो बोलते हैं ना कि इफ यू गो टू लद्दाख ईट एट दिस वन प्लेस, एक तो वहां है 4 जगह,
उधर उसमें से तू मेरे को बोल रहा है कि एक ही जगह पे खा, घंटा जो बाजू में दिखा मैं खा लेगा यार, हवा पतला है उधर, तेरे को क्या पता तू क्या डिसीजन ले रहा है. तो like anything on a reel is, in my experience, has been almost always overrated and unnecessarily good. Special mention to fire pan. Very good heuristic. Yeah, and that's a very good heuristic. Yeah. कि reel पे है तो बेकार होगा. And special mention to fire pan. Fire pan. Overrated. बंद हो गया. चीज फायर पान. मेरे लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि मेरे को फायर पान. You know how sad your life has to be going. We're eating fire pan. तुम इंटरनल कंबस्टन इंजन पे बैठ के इधर आया है और अभी तुमको फायर पान खाना है. I thought बंद हो गया वो फायर पान. अभी चलो है. अरे बस चलता है. गुजरात में जाओ कभी, पान सेंटर इतने बड़े बड़े. There's a place in Baroda which is such a huge पान सेंटर. This पान तो चलो ठीक है, सिगरेट ठीक है, लाइटर ठीक है. ये लोग प्ले स्टेशन बेचते थे एक पॉइंट पे. ठीक है, I'm not making this up. If you're from Baroda, you know what I'm talking about. But so fire pan, yeah, overrated. And what was the third one? Favorite, huh? Malwani food, man. Like my life comes back to Malwani food every time I go away anywhere. Beautiful. Naan curry approved. Yeah. Malwani food. And my wife is Bengali, so she eats a lot of fish as well. मेरे को कभी बचपन में खाना था नहीं मच्छी, क्योंकि मतलब गुजराती house, so no food. But when I came in front of like fish, and I still get a little uncomfortable eating fish, but like that's the one thing where I will overcome all my, पापलेट में बहुत सारा हड्डी विड्डी रहता है, चलेगा. हाँ, मैं इसलिए बंगाली लड़के से शादी किया ताकि वो तोड़ के दे सके मेरे को मच्छी ठीक से. And that's one motivation. Tisriya is also like a very within Malwani cuisine also, like clams, they are very underrated the way they are. जो that earthy, like that fish के environment का जो taste का बात होता है ना, I think clams have that perfect balance of having that sea salt water taste and this thing as well. Correct. Congratulations by the way on recently getting married. आपकी शादी पे कौन सा खाना था? Veg. Bengali, दोनों. It was just veg. Yeah, my parents were very adamant. Her parents were very forgiving and accommodating. So that's why it happened. वो गाड़ी में भी कारोबार टाइप कुछ नहीं था? नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो नहीं होता. चल रहा होगा हमें. पर नॉनवेज हमें नहीं पता. इमेजिन अ कारोबार फॉर नॉनवेज फूड. कैन यू इमेजिन? हाँ, वही तो. कि वो ऐसा स्कोडा की डिक्की में फ्रायर लाए ले अंकल और मांदेली डाल रहे अंदर फ्राई करने. That's a great idea. वो चल रहा है साइड में तंदूरी लगा पड़ा है, ये लो भाई तंदूरी चिकन खाते हो. सदफ, ये बिजनेस आइडिया है आपके लिए, है ना? You set up a कारोबार for non-veg in parties where it's not allowed. For those comedians जो प्लेन में सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, वो शादी में वेजिटेरियन होगा, तो उनके लिए नॉन-वेज कारोबार. ऐसा ढूंढना पड़े कहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन जाते हैं कॉफी पीने को, वहीं जाके बाहर लगा दुकान. वहीं पे सस्ता खाना. आइए 100 रुपए का 200 रुपए का. और फाइंड अ वे टू पुट फायर पान्स इन बार्बर शॉप्स, बिकॉज दैट वे वो नाक का बाल जल जाएगा पूरा मस्त खाते. नाइस ट्रिम. आई हैव सीन नॉट नाक का बाल, लेकिन हाँ सर के बाल जलाते हैं लोग, एंड देन बाल काटते हैं बाल जला के. अरे वो भी बना था, वो रील में वो बनाता है, ऊपर मैगी बना देता है वो आदमी के बाल पे यार. हाँ, वो छोड़ने का. लकीली मैंने बोलो, ये है क्रेज, ये ओवररेटेड बाल का मैगी. बाल का मैगी. अच्छा, प्लीज ऐसा चीज ना करें. अगर आपका ये फेवरेट है और या अंडररेटेड है, तो हमारी पॉडकास्ट सुनना बंद कर दीजिए. सॉरी. बता दीजिए कम से कम. सुन लो यार, ऐसा मत बोलो, सुन लो. नहीं, तभी मालूम चले. अच्छा, मैं सॉरी टू, कैन आई प्लग नाउ? कैन आई प्लग समथिंग? Can I? Yes, all yours. मैं टूर पे जा रहा है पूरा इंडिया, प्लीज आओ मेरे को देखो. It's called the wedding show. It's very funny and it's about a wedding. Awesome. Not my wedding, maybe my wedding, who knows? But please come watch me. And the tickets are on Book My Show. And listen to Vartalab, because Naveen and I do this only, but we're both comedians, so the jokes are even worse. And we just talk shit and tell stories with fun people every week. So that's on. दोनों का लिंक जो है पॉडकास्ट एज वेल एज द शो, हम डिस्क्रिप्शन में है, अपना क्लिक करें और प्लीज जाएं. फॉलो कर लें भाई साहब. वो सब ठीक है. जो भी खाते रहते हैं ना, पकड़ लो. फॉलो मत करो, टिकट खरीदो. मतलब फॉलो कर, टिकट खरीद के फॉलो करो. मतलब लिटरली फॉलो करो, नॉट ऑनलाइन फॉलो करो, लिटरली फॉलो. मेरे पीछे फिजिकली फॉलो करो. स्टॉक करो बढ़िया से. When you all come to Bombay to record an episode, please have the samosas from Gujarat Dairy. We must have it. Gujarat Dairy, okay. It's down the road. पॉडकास्ट का तो पता नहीं, लेकिन हाँ बॉम्बे तो आता है. So one Gujarat that lives up to the promise. On that Gujarat nice note, Gujarat model, हम करते हैं दुकान बंद.
If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcast on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit on Twitter @BandTofu and on Instagram @TheHustlingGlutton.